Welcome, dear students. This is our lecture number 6 on special theory of relativity. और आज के lecture में we shall study relativistic mass. Now, the question here arises is that what is the origin of relativistic mass? यानी हमें इस concept को develop करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? Its answer lies in the fact कि अगर हम mass को constant माने with velocity, that means velocity changes, it increases or decreases, but we consider mass as constant. तो जब एक ऑब्जेक्ट relativistic speed पे travel करता है, relativistic speed means a speed which is tending to speed of light, which is tending to vacuum speed of light. तो तब हम अगर एक सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम देखें तो we determine total initial momentum of a system and total final momentum of the system. Total final momentum of the system. तो ये दोनों हमें बराबर नहीं मिलते हैं. So that means if we treat mass as constant, then the law of conservation of momentum does not hold good. So in order to make the law of conservation of momentum hold good, because law of conservation of momentum is a universal law and it has to hold good. So to make this law of conservation of momentum hold good, we change mass with velocity. So this is the origin of relativistic mass. The origin of relativistic mass is to make the law of conservation of momentum hold good, even if the objects or bodies are traveling at relativistic speeds. So let us start. Let us consider two frames. One frame is S and it is stationary. This is stationary frame and S prime is moving. This is moving frame and it is moving with a velocity v with respect to the frame S. Initially, when both frames measure time is equal to 0, that is t is equal to t prime is equal to 0, हम ये अज्यूम करते हैं कि इन दोनों के जो ओरिजिन्स हैं वो कोइंसिडेंट थे, वो एक ही जगह पे थे, एंड देन द फ्रेम S प्राइम स्टार्टेड मूविंग अलोंग x एक्सिस विद अ वेलोसिटी v. राइट, उसके बाद हम we consider collisions of two balls, ball A and ball B. They are identical. इन दोनों के mass identical हैं. Both balls have got same mass m and they are approaching each other with the same speed v. Ball A is traveling to the right, तो इसकी velocity होगी plus v, and ball B is traveling towards left, so that's why इसकी velocity है minus v. So this is the situation before collision, और ये सब कुछ हम observe कर रहे हैं in frame S prime. So this is S prime observations. So we are observing from frame S prime कि दो balls हैं A B, दोनों identical हैं, दोनों का mass same है and they are approaching each other. तो जब दो में से एक towards right travel कर रही है before collision, तो उसकी velocity हम plus v देंगे
और जो दूसरी बॉल है बॉल बी विच इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो उसकी वेलोसिटी -v होगी। तो दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन। फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कोलिजन, अगर आपको याद हो, if two identical balls approach each other with the same speed, after collision they both become one entity and they come to rest. So after collision they coalesce into one body. ये दो bodies जो हैं, this is the situation after collision. ये दोनों bodies एक ही body बन जाती है with mass 2m but velocity 0, because ये दोनों bodies identical थी, इनके मास इक्वल थे, इनकी स्पीड्स इक्वल थी, हाँ डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट थी, तो इनकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में बराबर थी बट डायरेक्शन में अपोजिट। तो आफ्टर कोलिजन दे बोथ स्टिक टुगेदर एंड कम टू रेस्ट। सो दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन as viewed from frame S prime. Now let us observe the same situation before collision, after collision as per frame S. Now our frame S is rest frame. This is our rest frame. So supposing body A का जो mass है, when we view from frame S, supposing its mass is m1 and its velocity is ua. Similarly जो body B है, जब इसको हम observe करेंगे from the rest frame S, supposing its mass appears to be m2 and its velocity appears to be uv. So this is the situation before collision. फ्रेम S प्राइम में बॉडी A की वेलोसिटी है +v, बॉडी B की वेलोसिटी है -v, और रेस्ट फ्रेम में बॉडी A की वेलोसिटी है ua, तो वी हैव टू डिटरमाइन दिस ua, और बॉडी B की वेलोसिटी है ub, तो वी हैव टू डिटरमाइन दिस वेलोसिटी ub। तो इसके लिए हम यूज करेंगे द रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। The equation for relativistic addition of velocity is ux equals ux prime plus v whole divided by 1 plus v by c square ux prime. V is the velocity of the moving frame. ये हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया। ux prime is the velocity of object or body in moving frame, that is S prime, and ux is the velocity of the same object but in stationary frame S. तो इस इक्वेशन को हम बारी बारी अप्लाई करेंगे बॉडी ए पर भी और बॉडी बी पर भी। तो इनकी वेलोसिटीज दी गई हैं इन मूविंग फ्रेम एस प्राइम। तो लेट अस सी कि हमें इनकी वेलोसिटीज क्या मिलेंगी इन फ्रेम एस। तो फॉर बॉडी ए यू एक्स इज इक्वल टू यू ए, सपोज इसको हम इक्वल टू रखते हैं यू, and ux prime is v, yani the body A has velocity v in the moving frame and the frame itself has velocity v. So let us substitute in this equation. So we will get ua equals ux, इसकी जगह भी v सबस्टिट्यूट करेंगे, प्लस फ्रेम की वेलोसिटी तो v है ही, देन 1 प्लस v इज देयर, एंड ux प्राइम की जगह v सबस्टिट्यूट करेंगे। तो हमें न्यूमरेटर में ट्वाइस v मिलेगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस v स्क्वायर मिलेगा। एंड
we have put this equal to u. So that means the velocity of body A as observed in frame S is u. Now let us check what is the velocity of body B as viewed from frame S. उसके लिए भी हम यही इक्वेशन यूज करेंगे. We will use this equation for body B also. For body B, ux equals ub and ux prime, that is its velocity, the velocity of body B in frame S prime is minus v, which is here, minus v. So हम यही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज करेंगे. ux की जगह हम ub लिखेंगे इज इक्वल टू ux प्राइम, उसकी जगह हम लिखेंगे माइनस v और प्लस v तो यहाँ पे है. तो दिस इज ux प्राइम, दिस इज वेलोसिटी v और डिनोमिनेटर में भी फ्रेम की वेलोसिटी है v और ux प्राइम जो है उसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है माइनस v. तो आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं इट इज v माइनस v, सो दिस होल थिंग विल बिकम 0. So that means in frame S, body B appears to be at rest. So हमें UB 0 मिलता है and UA के लिए हमें ये एक्सप्रेशन मिलती है and we put this whole thing equal to U. तो ये हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की. हमें मूविंग फ्रेम में बॉडी A की वेलोसिटी पता थी, इट वाज प्लस v, बॉडी B की वेलोसिटी थी माइनस v. तो फ्रेम S में बॉडी A की वेलोसिटी हमें मिलती है ट्वाइस v by 1 plus v square by c square and we have put that equal to u. और बॉडी B की वेलोसिटी हमें 0 मिलती है. सो बॉडी B appears to be at rest in frame S. So this is the situation before collision. Now let us see what happens after collision. So UA equals U and UB is 0. Body B is at rest. Now let us see what happens after collision. देखें, after collision as viewed from frame S prime, both bodies sit together and come to rest. So as per frame S prime, the two bodies A and B, they are both at rest. तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी फ्रेम S प्राइम की है वही वेलोसिटी इन दो बॉडीज की होनी चाहिए as per frame S. Because if for frame S prime the two bodies is at rest or at rest, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्रेम S प्राइम को स्टेशनरी माने तब ये दो बॉडीज भी स्टेशनरी होंगे. लेकिन एज पर फ्रेम S प्राइम इज मूविंग विद velocity equal to v and since फ्रेम S प्राइम के लिए ये दोनों बॉडीज एट रेस्ट हैं, तो इसका मतलब है कि इन दो बॉडीज के साथ फ्रेम S प्राइम अटैच है. सो दैट मीन्स जो वेलोसिटी फ्रेम S प्राइम की है वही वेलोसिटी इन दो बॉडीज की भी होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाई एज पर फ्रेम S इन दोनों बॉडीज की फाइनल वेलोसिटी है v, the same velocity that of the moving frame S prime. So let us apply law of conservation of momentum in frame S. यानी कि हम initial momentum देखेंगे, हम final momentum देखेंगे and we will equate
the total initial momentum and total final momentum. तो अगर हम यहाँ पे टोटल इनिशियल मोमेंटम देखना चाहें इन फ्रेम एस, टोटल इनिशियल मोमेंटम हम देखना चाहें तो that will be, there is body A which has got mass m1 and it has velocity u, plus there is another body B which has mass m2 but its velocity is 0. So this is the total initial momentum. इसी तरह हम फ्रेम S में टोटल फाइनल मोमेंटम देखना चाहें तो टोटल फाइनल momentum will be equal to, there are two bodies here after collision and they have got same velocity v, so we can treat it as a single body having mass m1 plus m2 and its velocity is v. So this is the total initial momentum which will be only m1 times u because this second term will become 0. And this is the final momentum. So we will equate, this is initial momentum and this is final momentum. तो इसमें हम देखते हैं कि ये टर्म जो है this will become 0. तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचता है खाली m1 टाइम्स u. अच्छा, यहां से हम v के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. v के मल्टीपल में है m1 प्लस m2, तो वो इस m1 के डिवीजन में चला जाएगा. सो वी गेट एक्सप्रेशन फॉर v इक्वल्स m1u divided by m1 plus m2. So this is what we get expression for v in terms of u. So now we have got two equations, equation number 1 and equation number 2. Equation number 1 ये हमें मिली थी, this is basically velocity of body A as seen in frame S, और इसको हमने इक्वेट किया था इक्वल टू u. और हमें इक्वेशन नंबर 2 अभी मिली, दिस गिव्स अस v इन टर्म्स ऑफ u. तो आप देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे v है, तो we will substitute it from equation number 2. So we will use equation number 2 in equation number 1. अच्छा, equation number 1 के डिवीजन में भी v है, तो वहां पे हमने v का स्क्वायर यूज करना है. So we will write u equals twice, फिर v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम from equation 2, then divided 1 plus v square, तो this is v squared and डिवीजन में है c square. ओके, तो पहले तो हम देखते हैं कि this u and u will get cancelled in the numerator. उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में पूरी की पूरी टर्म है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो we will get 1 plus m1u divided by m1 plus m2 होल स्क्वायर, और इसके डिवीजन में है c स्क्वायर, तो आई विल राइट इट एज 1 by c स्क्वायर इक्वल्स, तो राइट हैंड साइड पे हमें मिलेगा 2ice m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करेंगे कि जो u है ये स्क्वायर होके बाहर आएगा, तो वी विल गेट हियर u स्क्वायर. So this is what we get, 1 plus m1 का स्क्वायर और डिवीजन में m1 plus m2 का अलग स्क्वायर है, इनटू u स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस m1 by m1 plus m2. तो इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करेंगे. This is what we have got. We will multiply this equation on both sides by
m1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो पहली टर्म है 1, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्लस m2 स्क्वायर सी स्क्वायर एंड देयर इज 1 प्लस, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी टर्म को भी यही m1 प्लस m2 स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू, और दूसरी टर्म क्या है, दूसरी टर्म है m1 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 स्क्वायर इनटू u स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। डन विद लेफ्ट हैंड साइड। और इसी तरह राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में भी हम m1 प्लस m2 होल स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, और वहां पे टर्म है ट्वाइस m1 बाई m1 प्लस m2। तो पहली टर्म में कोई चेंज नहीं आएगी, अलबत्ता लेफ्ट हैंड साइड में दूसरी टर्म देखें, दिस m1 plus m2 square will cancel with this term in denominator, c square and c square will cancel। राइट हैंड साइड पे m1 plus m2 जो डिनोमिनेटर में है वो इसका एक पावर कम करेगा, तो यहाँ पे इसका पावर 1 बचेगा। तो दिस इज व्हाट वी विल गेट इन द नेक्स्ट स्टेप। तो पहली टर्म में बचेगा m1 प्लस m2 स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज हेयर। दूसरी टर्म में बचना चाहिए m1 स्क्वायर u स्क्वायर दैट इज हेयर। और राइट हैंड साइड पे है ट्वाइस m1 विच इज हेयर, एंड देन ब्रैकेट में m1 प्लस m2 दैट इज हेयर टाइम्स c स्क्वायर दैट इज हेयर। So that is what we have got this. इसको हम और सिंपलीफाई करेंगे। We will open those brackets. Let us open the brackets. पहले हम ये m1 plus m2 स्क्वायर इसको एक्सपेंड करेंगे, तो we will get m1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 plus m2 squared into c square, then plus m1 square u square is equal to, राइट हैंड साइड पे हम पहले ट्वाइस m1 से इस ब्रैकेटेड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली टर्म हमें मिलेगी ट्वाइस m1 स्क्वायर और दूसरी टर्म हमें मिलेगी ट्वाइस m1 m2, और इसके साथ भी है प्रोडक्टेड सी स्क्वायर। अब हम ये सारे ब्रैकेट्स खोल देंगे, तो वी विल गेट m1 स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 सी स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस m1 squared times u square. This is left hand side. Right hand side में we will multiply by c square on both terms. तो पहली टर्म हमें मिलेगी twice m1 squared multiplied by c squared प्लस दूसरी टर्म हमें मिलेगी twice m1 m2 times c squared। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, दिस टर्म ऑन राइट हैंड साइड एंड दिस टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल गेट कैंसल्ड। हम ऐसा करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम सिर्फ m2 स्क्वायर वाली टर्म रखेंगे, तो वी विल गेट m2 स्क्वायर्ड c स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड पे पहले हम ये टर्म लिखेंगे, दिस इज ट्वाइस m1 स्क्वायर्ड c स्क्वायर्ड, फिर इस टर्म को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इट विल बिकम माइनस m1 स्क्वायर्ड c स्क्वायर्ड, फिर इस टर्म को भी राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ये भी माइनस बनेगी m1 स्क्वायर्ड u स्क्वायर्ड।
नाउ दिस इज ट्वाइस m1 स्क्वायर c स्क्वायर, इसको एक m1 स्क्वायर c स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक बचेगा, तो वी गेट m1 स्क्वायर्ड c स्क्वायर्ड माइनस m1 स्क्वायर्ड u स्क्वायर्ड। लेफ्ट हैंड साइड पे है m2 स्क्वायर्ड c स्क्वायर्ड। हम ऐसा कर सकते हैं कि वी कैन टेक कॉमन आउट m1 स्क्वायर c स्क्वायर। तो पहली टर्म में तो बचेगा -1, पहली टर्म में बचेगा 1, देन माइनस m1 स्क्वायर को कॉमन आउट हमने कर लिया है तो u स्क्वायर बचेगा, और चूंकि हमने c स्क्वायर को भी कॉमन आउट किया है जो कि दूसरी टर्म में नहीं है तो वो डिवीजन में हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है m2 स्क्वायर्ड c स्क्वायर्ड, तो c square and c square will get cancelled on both sides, so this is what we will get. Let us take square root on both sides, square root and square root. So this square and root will go, square and root will go. So we will get m2 equals m1 times under root 1 minus u square by c square. इस अंडर रूट टर्म को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो we will get expression for m1 as m2 divided by under root 1 minus u square by c square. This is our equation number 3. So we have got expression m1 is equal to m2 divided by under root 1 minus u square by c square, and this whole thing is for observations made in frame S. Now जरा देखें, in frame S body B is at rest, तो हम m2 को rest mass B कह सकते हैं। This is mass of the body at rest, तो इसको हम m0 से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड बॉडी A जिसका मास m1 है, इट हैज वेलोसिटी u, तो इसको हम मास एट वेलोसिटी u कह सकते हैं, और इसको हम सिंपल m से डिनोट करेंगे, बट दिस m is a function of u, as you can see from this equation that it depends on its velocity. तो जब हम इक्वेशन नंबर 3 में ये चेंजेस करेंगे कि m2 की जगह हम m0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज द रेस्ट मास, एंड m1 की जगह हम सिंपल m लिखेंगे, बट दैट मीन्स दिस m इज मास मूविंग एट वेलोसिटी u. So we will get m equals m0 divided by under root 1 minus u square by c square. तो अक्सर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u के बजाय v से डिनोट करते हैं, तो we will simply make the substitution v for u, where now v is velocity of the object. So we get m is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by c square. And यहाँ पर जो ये the factor है 1 divided by under root 1 minus v square by c square, we put this equal to gamma, तो हमें m मिलता है गामा टाइम्स m0। और हमने अक्सर देखा है इससे पहले भी that this gamma is greater than 1, so that means m will be greater than m0. So that means एक बॉडी का मास रेस्ट पे सबसे कम होता है, और जितनी जितनी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी उतना उतना उसका मास भी इंक्रीज होता है। नाउ कम्स द फिजिकल सिग्निफिकेंस कि
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करने के लिए, to hold good the law of conservation of momentum at relativistic speeds, there was a need for mass to be modified. अच्छा, अभी तक जो भी हमने किया that was all theory. Equation number 4 is theory, but 1901 से लेके 1915 तक काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए on electrons and beta particles by Bucherer, Kaufman and others, and they experimentally verified this equation number 4, that is the variation of mass of a material particle with its speed. Now let us consider two extreme special cases. Case first, when the object has velocity very small as compared to speed of light, that is, then we can neglect v square as compared to c square. तब हम देखेंगे ये अंडर रूट टर्म हमें क्या मिलेगी. We have got m is equal to m naught divided by under root 1 minus v square by c square. यहाँ पे v का स्क्वायर था, उसकी जगह हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो डिनोमिनेटर में हमें अंडर रूट सिर्फ 1 मिलेगा, and we get m is equal to m naught. So at ordinary speeds, when the speed of material object is very low as compared to speed of light, the mass in motion very much equals its rest mass. So at ordinary speeds, relativity reduces to classical mechanics, because as per classical mechanics, body ka mass at rest should be equal to body ka mass in motion. Now let us consider the other extreme case, when the object has its speed exactly equal to speed of light c. Then let us see what equation number 4 will give us. We had equation m is equal to m naught divided by under root 1 minus v square by c square. तो यहाँ पे हमने v की जगह c सब्स्टिट्यूट करना है, तो we will get this equal to 1, c square by c square. तो we will get under root 1 minus 1 denominator में, and that is 0. So we get m naught by 0, and that is infinity, and that is not possible. We cannot have infinite mass. तो इससे हमें ये पता चला कि ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है. An object, a material object, cannot travel at a speed equal to speed of light or greater than speed of light in vacuum. अलबत्ता हाँ, यहाँ पे एक important point मैं आपको बता दूं. A material particle can travel faster than light, but not faster than the vacuum speed of light. इसकी एग्जांपल मैं दूं. If we have got some medium और उसमें हम लाइट को पास करा देंगे, तो because of the refractive index, the light will get slow down. Light will get slow down. तो वैक्यूम में या एयर में इसकी स्पीड 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. और अगर हम गिलास की बात करें, तो गिलास में लाइट की स्पीड है 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. अब एक चार्जड पार्टिकल हम फायर करेंगे गिलास में, which can have velocity 2.1 into 10 raised to power 8 meter per second. So if this is the velocity of charged particle, so in the medium, this charged particle will travel faster than light, but उस टाइम लाइट की खुद की स्पीड c नहीं होगी, c से कम होगी. And when this happens, एक रेडिएशन वहां से इमिट होती है, and we call that Cherenkov radiation. So a material particle can travel faster than light, but not in vacuum, not in empty space, but in some medium.
This is the graphical variation of mass with speed. When the speed of object is 0, its mass is m naught. The rest to mass, and जितना हम speed increase कर रहे हैं, the mass of the object increases gradually, and when the speed is exactly equal to vacuum speed of light, the mass tends to infinity. We will conclude today's lecture with a problem. And the problem is, at what speed mass of a body becomes 4 times its rest mass. So this is the equation that we have to use. Given is that mass at some speed becomes 4 times its rest mass, and required is that velocity. So we will use in this equation that m equals 4 times m naught. So we will get 4 times m naught is equal to m naught divided by under root 1 minus v square by c square. M naught and m naught will go. हम इस अंडर रूट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो वी विल गेट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 4 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. उसके बाद वी विल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर एंड रूट विल गो. वी विल गेट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 16, 4 का स्क्वायर. माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर अपनी जगह पे रखेंगे, तो इस 1 को यहाँ पे ले जाएंगे, तो वी विल गेट 1 बाई 16 माइनस 1. बोथ साइड्स पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 माइनस था वो प्लस बन जाएगा, 1 बाई 16 प्लस था वो माइनस बन जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 माइनस 1 बाई 16 विल बिकम 15 बाई 16. So we have got v square by c square equals 15 by 16. Let us take square root on both sides. So square root and square root. लेफ्ट हैंड साइड पे v का स्क्वायर c का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो वी आर गेटिंग v बाई c एंड अंडर रूट 15 बाई 16. इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें, वी गेट 0.968. So which implies v equals 0.968 times the vacuum speed of light. This is the speed of an object at which its mass will become 4 times its rest mass, and that is the answer.